फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर आशुतोष गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं ट्रेकिया के बारे में। ट्रेकिया इज़ अ विंड पाइप, राइट। तो जब हम कार्डियक असेसमेंट करते हैं बेबी की, जब हम बेबी के दिल को डिटेल्ड एक असेसमेंट हम करते हैं तो उसमें ट्रेकिया की जो पोजीशन है बहुत टिपिकल सी होती है, राइट। तो वो बैक ऑफ द हार्ट में 3 ग्रेट वेसल्स होती हैं, सुपीरियर वेना केवा, आर्च ऑफ आउटा, पल्मोनरी ट्रंक। तो उनकी पोजीशन, उनका ब्लड फ्लो और उसके साइमल्टेनियसली जो ट्रेकिया की पोजीशन है वो बहुत टिपिकल सी होती है, राइट। तो व्हेनेवर वी आइडेंटिफाई दैट द आर्च ऑफ आउटा, ट्रेकिया और आर्च ऑफ आउटा के बीच की जो 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 सिमिलैरिटी है, कॉन्कॉर्डेंस है, वो गड़बड़ हो गई है, तो वो द्योतक या मार्कर हो सकता है अंडरलाइंग क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के बारे में। सामान्यतः हमने देखा है कि जो ट्रेकिया होता है वो लेफ्ट साइड होता है, राइट। So if the trachea is on the right side of the aorta, so that becomes a right aortic arch. If the aorta encircles, makes a U or a complete encircles the trachea, so that becomes a double aortic arch, right. So ये कोनोट्रंकल malformation का एक द्योतक या मार्कर हो सकता है और हम ऐसा समझ सकते हैं कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को माइक्रोडिलीशन होते हैं। तो माइक्रोडिलीशन सिंड्रोम्स में भी 22q माइक्रोडिलीशन के बारे में ये कि मार्कर हो सकता है, राइट। सो मैनी टाइम्स व्हाट वी हैव आइडेंटिफाइड इज दिस कि अरसा है, एबरेंट राइट सर्कुलेशन आर्टरी है, या राइट aortic arch है, राइट। सो मैनी टाइम्स द पीपल दे से दैट इज अ नॉर्मल वेरिएंट, राइट। बट हाउ डू वी आइडेंटिफाई दिस इज अ नॉर्मल वेरिएंट एंड वी आर नॉट डीलिंग विद एनी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इन द बैकग्राउंड, तो वो बहुत डिफिकल्ट है, राइट। तो मैं आज आपको एक केस दिखा देता हूँ इन विच वी हैव आइडेंटिफाइड and we keep on insisting on doing the genetic analysis of the fetus. We identified the mutation and therefore what we had counseled earlier, we are counseling exactly opposite in the after we have got the reports, right. मैं दिखा देता हूँ। So this is the case that we are seeing now. तो 4 chamber view and the outflow tracts are absolutely good, okay. So trachea की जो position है vis-a-vis with the arch of aorta उसको focus कर रहे हैं, and then we are identifying कि instead of being on the left hand side, the trachea is on the right of the arch. So this is the right aortic arch. You're getting my point. So we are putting the color and then we are identifying this is a right aortic arch. हमको ऐसा पता है कि इसके साथ में गुणसूत्र की खराबी या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी एसोसिएट हो सकती है, राइट। सो ये पिक्टोरल डायग्राम है। दिस इज हाउ द ट्रेकिया, सो है ना, विद द ट्रेन्ड आईज वी कैन सी द ट्रेकिया, राइट। सो वी डिड द इन्वेजिव टेस्टिंग व्हिच इज कॉल्ड एज एन एमनिसेंटेसिस एंड लुक्ड अराउंड फॉर द सॉर्ट ऑफ माइक्रोडिलीशंस। सो ये जो लेफ्ट साइड का है वो तो नॉर्मल है, एंड देन वी हैव आइडेंटिफाइड a 22q माइक्रोडिलीशन टू द बेबी। जब कार्डियक असेसमेंट करते हैं तो एक्सटेंडेड कार्डियक असेसमेंट में व्हाट वी कैन आइडेंटिफाई इज एन एबरेंट राइट सर्कुलेशन आर्टरी, वी कैन आइडेंटिफाई राइट aortic आर्च, वी कैन आइडेंटिफाई अ डबल aortic आर्च। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि 1 to 2% जो फीटसेस हैं दे माइट बी एसोसिएटेड विद सम माइक्रोडिलीशन सिंड्रोम्स। सो 22q माइक्रोडिलीशन एक 5 MB का रीजन होता है और इसमें 4 या 5 वैरायटी के माइक्रोडिलीशंस हो सकती है। सो दिस इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट माइक्रोडिलीशंस व्हिच कैन हैपन विद दिस कोनोट्रंकल मैल्फॉर्मेशंस। पहला, मेनी टाइम्स द पीपल दे से दिस इज अ नॉर्मल वेरिएंट एंड ऑल दो स्टफ, बट हाउ डू यू आइडेंटिफाई? वी कैन डू सम असेसमेंट टू सी फॉर द थाइमस, राइट। लेकिन थाइमस अप्लेजिया और हाइपोप्लेजिया even though the nomograms are available, but it is very difficult to say, right. So it is always better to do the confirmatory testing which is called as invasive testing, amniocentesis, and then what we can do is a comprehensive genetic analysis of the baby. So we picked up at this 22q microdeletion, right. So इस केस में भी ऐसा ही था कि that probably we kept on insisting that probably even though the baby looks good and this could be normal variant and the blah blah blah, but probably after our persistence and insistence they had agreed for this amniocentesis, right. And then we identified this 22q microdeletions. Now this is a multi-system involvement, right. So probably you can have even though the palatal abnormalities were not there, but probably what we can identify कि immunodeficiency से लेकर, and then we can have a lot of endocrine abnormalities, and we can have facial dysmorphism. They can have graft to host reactions. ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब होता है तो भी इरेडिएटेड ल्यूकोपियर, बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं. वी कैन हैव सम इश्यूज रिगार्डिंग दी
subnormal mental IQ to the baby and all those stuff, right? Okay, so this is an entire different gamut once we identify this 22q microdeletion, right? Okay, and so this is how a small sort of a wind pipe, उसकी जो पोजीशन है जिसको ट्रेकिया बोलते हैं, उसकी पोजीशन ने राइट aortic arch में कन्वर्ट किया, और काफ़ी मनाने के बाद they had agreed for an amniocentesis, and on first case we were telling that this could be a normal variant to identification of 22q microdeletion. So meaning thereby that this whole of the pictorial diagram and the counseling changed 360 degrees, and then after the reports were there, even though we did the first we did the amniocentesis and then we did the MCC, metal cell contamination, and QFPCR, which turned out to be normal. So initial reports were normal, so we ruled out trisomy 21 or Down syndrome, right? But then this sort of a low pass genome sequencing, it took some 14-15 days for the reports to be there, and then we identified that this is a 22q microdeletion. So meaning thereby that the initial reports were normal, and then so meaning thereby that the counseling sometimes becomes challenging, that the initial reports are normal but the final reports are abnormal, right? So this is how the things they can go not in our favor, right? But by the end of the day, doing those tests and picking up those mutations is it is of paramount importance, both for the couple as well as for the fetus, right? So once we've identified, we complete the story by doing the invasive testing and then the said dedicated test which is intended to be done, right? Thank you very much for your patient listening.